Assalamu alaikum. Thank you for joining us for our third series. As you know, we are covering digital transformation, and each week we come to you and we talk to you. So today again, we have a very interesting topic. And as you know, my first guest is CEO of MDS Food. He's running Hardees Pakistan here. And today we are going to talk about the challenges faced by fast food industry. So let me invite my first guest here, Sohail Yousaf. Thank you, Farah. Thank you, Professor Saab. How are you? Yeah. So first question of Farah, please. जी, Sohail, मुझे आप kindly ये बताएं कि were you guys prepared for these challenging situations? जैसे pandemic आ गया है, so fast food जो है वो बंद हो गया है, पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन है. So how are you managing? आपकी टीम इसको कैसे manage कर रही है? जी. Actually, I don't think anyone on the world was ready for COVID-19, especially fast food. You know very well. Or it's a tragedy. The scale is going more and more, then it will be more trouble. But again, we are working. Before that, we are working with our team on online and delivery options. We are already working, especially in the food, in the fast food. But again, the challenge is there, and believe me. What we can say that we're already working, but we are going online and we are trying to take more and more things like technology-wise. Okay, that's great. So, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस अभी 2 महीने हो गए हैं, ये लॉकडाउन है और फास्ट फूड ऑफ कोर्स सारा बंद है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, टेक अवे हो रहा है. So what are the 3-4 key learnings? अगर मैं आपसे पूछूं कि 2-3 key lessons क्या हैं जो fast food industry के लिए बहुत important है, especially as we are going through the corona days and we'll march towards post corona. जी. देखिए, एक तो जो challenges हमारे लिए हैं कि जो deliveries they should be like safe and security for the customers, like what we are doing right way. And सेकेंडली जो चीज हमारे ब्रेन में नहीं थी, जो कोरोना कोविड आने से हमारा इशू क्या हुआ कि हम ऑलरेडी प्लान तो कर रहे थे इसको कि हम डिलीवरीज ऑप्शन करें, ऑनलाइन करें या एप्स में करें. दे आर थिंग्स आर गोइंग डिजिटलाइजेशन, बट अगेन द इशू इज द सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफ द स्टाफ. एंड देयर इज लाइक वी ऑलरेडी वर्किंग इन दैट. एंड मैं बिलीव मी आपसे जो डिस्कस करूंगा कि हम जो है एक तो बैकएंड पे काम कर रहे थे ऐप के अंदर, और हमने डिलीवरीज जो देनी शुरू की हैं ऐप के अंदर, जो अब शुरू हो गई हुई हमारी, और हमने जो स्टॉक्स हैं जो हमने शुरू किए हैं उनको लेने के लिए. Right. All right. So let me invite my second guest. So Professor Dheeraj Sharma, he's from India. Prolific researcher. He has more than 100 papers in his name. He has written 10 books. पता नहीं लोग कैसे इतना काम कर लेते हैं. I'm really surprised, but he has done it. And he has been working with multi-industry, or he has insights about fast food industry as well. Currently, he's the director of one of the top business schools in India, which is Indian Institute of Management, Haryana. He has been associated to the top business school of India, which is Indian Institute of Management, Ahmedabad. So let's welcome our brilliant guest from across the border. Welcome, Professor Sharma. Thank you very much. I think we are in for a difficult time across the globe. And my feeling is that our consumption is going to be changed forever. I think globally, we are going to see a significantly different type of consumption, and also significantly different types of requirements from the services sector particularly. If you will see in terms of global response, and if you'll see the response particularly from Indian context, a large chunk of our population is still agri-based and rural-based. And therefore, if one has to
really protect the citizens, you would always be going after the rural sector and the agricultural sector. Now, the services sector, technically, one may segregate the service sector into two parts. One is the elective sector, and one is the emergent and urgent sector. So healthcare, is an emergent and urgent sector. Everybody's going to need it. Whereas fast food is an elective sector. You choose whether you wish to have fast food or whether you don't wish to have fast food. Education, again, is amongst the elective ones. It really doesn't make any difference, in my view, to anybody in the world if educational institutions were shut down for 3 months. I feel that way. People can do a lot of self-learning, a lot of available material is there. Now, given that fast food particularly and the hospitality industry is an elective type of service, I believe that we're going to see a lot more challenges for them. Now, if we take the example of the subcontinent here, and if we take Indian example, I believe that in our previous discussion that I had highlighted, that consumption has already in the fast food industry in India particularly has peaked. There was an era where people started to have fast food, and I'll go back, to the time of 80s. The fast food first made an entry in India in the form of kiosks, where people started to have in early 80s noodles. I still remember that, all these roadside kiosks would have that big tawa and big kadhai, and they would make noodles for 8 rupees or 10 rupees, and people would consume it. And then the fast food gained more prevalence in Indian context, particularly when television shows became popular on a Sunday. So Sunday used to be a very busy day, and people would not want to make food at home, and they started bringing food from outside. In 90s, first McDonald's opened in India, 1996 to be precise, and there was already a latent demand because the industry and economy had opened up in late 80s and early 90s. So there were long queues to eat McDonald's food, and then subsequently Burger King and so on and so forth. Now that matter is 24 years old. Within last 24 years, this industry has become extremely competitive. You have large number of other people occupying the same turf. You have McDonald's, you have Burger King, you have Taco Bell, you have Pizza Hut, Domino's, Quiznos, and many others. Now imagine there is only a finite amount of food that human beings can eat. So it is very much akin to toothpaste. So in marketing terminology, if you remember back when we were growing up, once a day toothbrushing was enough for us. दिन में एक बार आपने ब्रश कर लिया, that was enough. फिर क्या हुआ कि आपको लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि brush your teeth twice a day. And some of the large companies like Unilever, Procter and Gamble and so on and so forth started telling you, एक बार सुबह करो, एक बार शाम को करो. So you started brushing twice a day. Gradually over a period of time, they told us that start brushing thrice a day, brush after every meal. तो आपने 3 बार आपने अपने दांत चमकाने शुरू कर दिए. Now, human beings are not designed or programmed or naturally have an inclination towards brushing their teeth. ये तो है नहीं कि मैं आपको अभी कहूँ कि हाँ जी आप रुकिए मैडम जरा मैं ब्रश करके आता हूँ. तो morning and evening you are in the sanctuary of your home. दिन में तो आप काम कर रहे हैं. So they tested the limits of human beings to adapt to a particular product, which was toothpaste. So therefore, Colgate ने इसका आंसर कैसे दिया? मैं उसका आंसर आपसे रिलेट कर दूंगा आपकी ये जो फास्ट फूड इंडस्ट्री से. Colgate ने इसको बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया. अब एक बार तो वो बोल चुके हैं अभी 3 दफा ब्रश करो, और उसके बाद उन्होंने उसके बाद ये भी कह दिया कि ब्रश 3 times a day. फिर आप उसके बाद फ्लॉसिंग भी करो, माउथ वॉश भी करो, और उंगली से उसको मसाज भी करो, और ऑल्सो विजिट अ डेंटिस्ट वंस एवरी 6 months. सो इतना ज्यादा सिर्फ दांत ही है हमारे पास, आप सोचिए. सो इतनी कहानी बोलने के बाद ना यू कांट गो बैक एंड रीट्रैक एंड से नहीं 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 मैंने झूठ बोला था कि आप 2 ही बार करो या 1 ही बार करो. So what Colgate did is that they introduced a product called Colgate Total in Europe and in India. I don't know whether they have it in Pakistan. It's called Colgate Total. Colgate Total, price-wise, is about 30% more expensive than a typical Colgate.
तो कोलगेट वाले अब आपको क्या कहते हैं, व्हाट दे टेल यू इज कि दांत वैसे तो आपको 3 बार ही करना चाहिए, पर क्योंकि आप नहीं करना चाहते हैं, आपके कंस्ट्रेंट्स हैं, आप 2 बार करिए, बट उससे कोलगेट टोटल से करिए, which will give you a 12-hour protection instead of the usual one which gives you about 8-hour protection. So how do you relate it now to the fast food industry? अब फास्ट फूड इंडस्ट्री में सोहेल जी आपको अब कोलगेट टोटल लेके आना पड़ेगा। आपको ऐसा प्रोडक्ट लाना पड़ेगा जो कि कोरोना फ्री हो, वो सैनिटाइज्ड हो, और आपके बंदे भी उनके हाथ सैनिटाइज हो, वो जब डिलीवरी देने जाएं तो मोटरसाइकिल भी साफ हो, पर आप उसका 30% प्रीमियम आप चार्ज कर सकते हैं। वैसे तो आपके पास अवेलेबल है दूसरा वाला भी, तो आपको कस्टमर को ये बोलना पड़ेगा, पर उसमें आपको अपने हाथ भी खुद मांजने पड़ेंगे और अपने घर में सफाई भी खुद करनी पड़ेगी। उस खाने को आपको 4 घंटे रखना भी पड़ेगा, दोबारा गर्म भी करना पड़ेगा। बट अगर आप ये सब नहीं कर सकते, then you have Hardees total, whereby I'm charging you a 30% premium. That's what I have. I totally. That's very interesting. So now, Sohail, Professor Sharma has given you a new product line design. I'm not sure how many of the fast food industry champions are listening to Professor Sharma, but so again, what we are saying here, Professor Sharma, that in terms of consumer behavior, so we all have a set behavior or routine, and then the messaging can be done in such a way jahan pe we can change our routines, we can change our behavior. I'll go back to Sohail and I'll ask him a question यहाँ पर कि Sohail, अब जैसे आपके पास ट्रैफिक आती है, लोग हार्डीज आते हैं, हार्डीज लोग किसी स्पेसिफिक पोजिशनिंग की वजह से आते हैं, दे कैन गो टू मैकडॉनल्ड्स, दे कैन गो टू KFC, ये 3 ज्यादातर पॉपुलर है इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप मल्टीनेशनल्स की बात करें, अदर देन पिज़्ज़ा हट एंड सो एंड सो फोर्थ। सो आपके ख्याल में कौन सी ऐसी चीज है जो कि खींच के लाती है कंज्यूमर को टुवर्ड्स हार्डी, एंड एज प्रोफेसर शर्मा इज सेइंग कि वो जो चीज जो पहले खींच के लाती थी शायद पोस्ट कोविड ना खींच के लाए। सो व्हाट इज योर कमेंट अबाउट दिस? सोहेल, ओवर टू यू जी। बिल्कुल मैं एग्री करूंगा शर्मा साहब से जो बात कर रहे हैं। पहले तो हार्डीज जो लोग आते हैं फूड की वजह से आते हैं, इस जूसी, इस हैवी बर्गर, इट्स अ चार ग्रिल्ड बर्गर्स, स्पेसिफिक द फूड बात करूं तो। और अगर आप देखा जाए तो अब इसमें टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व हो जाएगी जो मुझे नजर आ रहा है। ऐसा कि आप अब अगर देखें जैसे इंडिया में, शर्मा साहब से अगर मैं कहूँगा तो विजुअल किचन्स बहुत ज्यादा हैं, जोमेटो है, देयर इज लॉट ऑफ किचन्स ओवर देयर एंड दे आर ऑलरेडी वर्किंग। टेक्नोलॉजी जो मेरे बात करने का पहले था कि टेक्नोलॉजी अभी उस तरह से इवॉल्व नहीं हुई पाकिस्तान इंडस्ट्री में फूड के अंदर, मगर जो अब मैं देख रहा हूँ वो इवॉल्व होनी शुरू हो गई है। वो कैसे हो रही है? अब जो विजुअल किचन्स होंगे कि अब आफ्टर कोविड-19 things will be changed, habits will be changed, जैसे शर्मा साहब ने फरमाया वो होनी है, क्योंकि फूड डिलीवरीज और फूड जैसे अभी एक ऐप बना है, अब मैं डिस्कस कर रहा था, एक दे हैव अ टेम्परेचर, सिंपल सॉर्ट ऑफ थिंग्स दे मेक दैट डिलीवरी विद टेम्परेचर, दैट स्टाफ का जो होगा वो डिलीवरी लेने से लेकर कस्टमर तक उसकी एवरीथिंग विल बी वो होगी, उसको देखा जाएगा और इट विल बी ऑन द ऑल द रिसीप्ट और ऑल द सिस्टम में आ रही होगी कि डिलीवरी तक उसका टेम्परेचर क्या था, क्या मुझे वो कोविड फ्री डिलीवरी मेरे डोरस्टेप पे मिली। सो दीज आर थिंग चेंजिंग एंड जो मुझे जो फास्ट फूड में ये लग रहा है कि जैसे अभी मैंने न्यूज़ सुनी पिछले दिनों, बर्गर किंग एंड अदर पिज़्ज़ा हट इन might be in Europe, they start deliveries restaurants, not dine-in restaurants. So these are the things will be changing in the future. All right. So there will be some new trends, as we say. So, so Professor Sharma, can I ask you this question? What other new trends do you think will emerge in the fast food industry post-corona, especially? Jay. देखिए मैं I'll repeat. Probably for you, it will be a repetition of the discussion that we were having. See, human beings' desire from food itself
has changed in the course of last about 30-35 years in Indian context. मैं उस दिन आपको एग्जांपल दे रहा था. If you study a typical Indian hero in a Hindi film, क्योंकि आप सब लोग मेरे ख्याल से आपके जो व्यूअर्स होंगे वो भी फिल्में तो देखते होंगे, so they can relate this. आप फिल्में तो देखते हो तो you can relate this my example with. So if you see 80s, early 80s में what was the shape of a typical Indian hero of a film? वो एक पतला लंबा आदमी होता था, उसके कोई मसल वसल नहीं होते थे. आपने अगर उसे देखा उसके यहाँ तक बटन खुले होते थे, और वो a typical hero was not a very muscular person, he was a very lean person, और वो ऐसे ही था. Which means at that point in time एक लंबा आदमी हो, थोड़ा सा सेहतमंद हो, उसको कहते थे ये खाते पीते घर का आदमी है. And that was a desire of the normal consumer also. तो इसीलिए अगर उस टाइम को आप स्टडी करें तो हमारे यहाँ पर it is concurrent with the milk revolution. दूध, दही, घी, इसके ऊपर ज्यादा लोगों का फोकस था. Then came the time of 80s. Late 80s, mid 80s में new actors like Sanjay Dutt, ये Sunny Deol and Salman Khan, ये सब आना शुरू हो गए. Now the focus all of a sudden shifted from being generally ये खाते पीते घर का towards having muscles. अगर आप उस टाइम की फिल्मों को देखें तो वो एक्टर्स की शक्ल पे कम कैमरा होता था, उनके बाइसेप्स पे ज्यादा कैमरा लगाते. So the population also started expecting that a typical consumer who is healthy should have big biceps and should have bulging muscles. So the focus of the food then started to shift from fat-oriented diets to more protein-oriented diets. So proteins उसमें ज़्यादा आने शुरू हो गए. So then comes mid-80s. Mid-80s में again experimentation with there is keto diet, there is a southwestern diet, a lot of these diets, and generally if you will see the focus of the hero again shifted from having bulging biceps to 6 packs, 8 packs, 12 packs, वो सब पैक आने शुरू हो गए. That is a reflection of society. Society उसको desire कर रही है कि that is the, so food consumption has correspondingly changed. Then came the recent time. अभी जो recent time में है इसमें ना muscles हैं, ना इसमें 6 packs हैं. Now is the era of fitness, athleticism, जिसमें के लोग athletic हों, they are lean, they are running, they are healthy, their cardiovascular health has become all of a sudden very important. So people have started shifting to herbal food, organic food, aloe vera आप देखें, flax seeds, इनके कभी नाम नहीं सुने थे हमने. Oatmeal, ओट घोड़ों को खिलाया जाता था, आज इंसान खा रहे हैं. These things have come in the forefront. So what does that imply for the fast food industry? Which means if I speak from the perspective here, the perspective is that fast food itself will have to reinvent itself. This has happened in the US context already. McDonald's started peaking its sales in late 90s itself. इसीलिए उन्होंने एक मैक्सिकन फूड चेन चिपोटली उसको स्टार्ट कर दिया था वहां पे, क्योंकि उनको पता था कि ये जो खाना है ये हेल्दी खाना, ये लोग नहीं, अनहेल्दी है, इसको लोग नहीं खाने आएंगे. So already there is a shift. So therefore, I believe the fast food will have to move towards something different, and that has to focus on freshness, health, organic, for at least the near foreseeable future. What was erstwhile, which was tasty, quick, and easy to handle, वो चीजें अब gradually खत्म हो जाएंगी. Interesting. So let me take a couple of questions from our audience. So I'm flashing one of the questions. Partially we have discussed, but I would like to have more feedback from you guys. So of course, people are worried about it. As Professor Sharma is saying, that you have to put whatever is coming from outside, you have to put it aside for 6 hours to make it sure that is like safe to eat. So, and this question is to both of you. So, Hardees इसको कैसे मैनेज कर रहा है? आपने कुछ एक दो चीजें बताई हैं, but at the moment आप क्या कर रहे हैं? और in the future, how would you handle it? जी, over to you. मैं इसको इस तरह लूंगा कि there is already SOPs for to making these
things like salad, cream, sauces and mayonnaise जो आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है मेरे सामने, इसको ये हमारे ऑलरेडी SOPs हैं जिसको हम ऑलरेडी ही मेंटेन कर रहे हैं at every temperature. So we are doing same way. So if there is no issue, मैं ये नहीं समझता इसमें कोई इशू होगा, और जो हम ऑलरेडी इसको टेम्परेचर जो होते हैं हमारे रूटीन की चेकअप्स होते हैं उसमें हम काम कर रहे हैं इसका। ठीक, right. जी प्रोफेसर शर्मा, your take on this? Yeah, I think again, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बहुत सारी चीजें जो हैं आइसक्रीम्स, सॉसेस एंड पर्टिकुलरली ज़्यादातर they are made by large multinational companies, and they have standard operating procedures into the use of preservatives, the shelf life of these products, and most of these items usually carry an expiration date. Now, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे सोहेल जो जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हार्डीज वगैरह, इनमें तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी ऐसे होते होंगे, मुझे लगता है कि वो आप एक्सपायर्ड आइटम यूज ही नहीं कर सकते, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू यूज। इनके पास आती ही एक इस तरह से सील्ड और इस तरह से वो स्टोर्ड आइटम आती होगी, सो इट वुड नॉट बी पॉसिबल. So I think the challenges for maintenance of this cold chain and so forth for organized restaurants like Hardees is very easy. ये तो वो जो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स हैं, जो छोटा एक रेस्टोरेंट है, उसको बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, क्योंकि उसको तो छोटे एक वो सप्लाई चेन से निकाल के लाना है. So for him it will be a lot easier. So in other words, अगर आप इसकी एक स्टडी ही कर लें, मेरे पास कोई स्टडी इसकी है नहीं, पर अगर आप इसको स्टडी कर लें तो आई कैन इमेजिन दैट a multinational chain would probably end up scoring better than a standalone restaurant in terms of these particular items. All right, cool. There is another question I'm flashing on the screen right now. So there is a local chain, Johnny and Jugnu. It's not like multinational. It is a local chain. I think they have only 2 restaurants. So now they are selling survival kits. So and it's, as this is written over here, it's selling like crazy. So आप एक business में थे, फिर कोई चीज आई, आपने अपना business change किया. So what is your take on this, Professor Sharma? Jay. You'll have to brief me on what is this Johnny and Jugnu first. Johnny and Jugnu is a restaurant, and they are popular for their burgers, and quite popular amongst college-going students. Okay, and what is a survival kit? सर्वाइवल किट जो है, व्हाट आई अंडरस्टैंड के जो आजकल वो कोरोना किट्स नहीं, आजकल जो चल रही हैं, आपका वो गियर है और आपका मास्क है और आपके ग्लव्स हैं. जी. अच्छा, तो वो सर्वाइवल किट्स का क्या, व्हाट वुड बी द रिलेशन ऑफ दैट विद द बर्गर्स? So that's what the question is. They have started selling survival kits. So from Johnny and Jugnu restaurant, instead of burgers, they are selling survival kits. Yeah. मुझे ऐसा लग रहा है कि this is rather opportunistic on the firm side. It's all right. It's all right. There's nothing wrong with this. But from a long-term, perspective of surviving in the industry, ये तो questionable रहेगा. What they could have done ideally, कि अगर ये deliveries में है, तो ये अपने एक एड ऑन प्रोडक्ट की तरह इसको अगर वो दे देते कि भाई मैं आपके घर में ये खाना पहुंचा रहा हूं, और वी ऑल्सो वुड यू लाइक टू ऐड, जैसे कि टिपिकली यहाँ पर वो बंदा पूछ ही लेता है, वुड यू लाइक टू ऐड अनदर कप ऑफ सॉस, और वुड यू लाइक टू ऐड अनदर मेयोनीज for 15 rupees or 20 rupees. I mean, that could have been the thing for them, is that when they're ordering food, they could have said, hey, would you like to pay 50 rupees? And I'll also add a survival kit along with the food. That would have sort of made a better impact than starting a business line altogether from a food chain. And as Professor Sharma is saying, it's very opportunistic of them. All right. It's all right. It's all right. No, it's good. मैं ये कह रहा हूँ कि opportunity को explore करना चाहिए. It's all right. But इसकी long term, consequences क्या रहेंगी? वो, I don't think उसमें कोई viability ऐसा बनने वाला है. You may be able to make some money here and there, but a big chain. अब आप, you have a chain. सोहेल साहब better answer देंगे इसका. अब वैसे तो मेरे ख्याल से हार्डी वालों के पास भी काफी होंगे, but I don't know whether they wish to stop making burgers and start selling masks.
question to you. Would you like to do something like this? देखिए जो सर्वाइवल किट से तो ठीक है, मैं जो समझ रहा था, एक तो इन्होंने ना कोई फूड अनकुक्ड चीजें बेचनी शुरू कर दी हैं, जैसे इन अ बॉक्स व्हाट आई हेard इन द मार्केट, जुगनी एंड जुगनी, यस यू कैन मेक द बर्गर्स एट इन योर होम, ठीक है। अब उसमें जो मुझे जो चीजें नजर आ रही हैं कि उसमें कुकिंग टाइम्स, टेम्परेचर, सेफ्टी, दीज आर द थिंग्स व्हिच इज वेरी क्रिटिकल इन टर्म ऑफ जो आपने सवाल जो मुझे किया, जुगनू जो है रेस्टोरेंट्स हैं जो पाकिस्तान में जो बेच रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो सर्वाइवल किट, यस यू कैन ऐड मोर टू सेल योर बर्गर एट द मोमेंट, वो आप कर सकते हैं। Right. That's again a very interesting tweak. आपकी discussion में आ रहे हैं. So instead of already cooked food, आप क्या करें? आप उनको पूरे का पूरा एक unbundle किया हुआ दे दें. तो हार्डीज का पैटी दे दिया, बर्गर दे दिया, सैलरी दे दिया और कह के भी अब तुम खुद बना लो. I don't know. ये भी आपकी गुफ्तगू से as you were talking and I was just thinking. Can it be a kind of like a variation of a product? I'm just thinking loudly right now. Can it be a product variation? Professor Sharma, your take, and then quickly I'll go back to Sohail. Jay. Why not? There are already restaurants in India and there are restaurants abroad jahan par people go and cook their food. It's already there. So at least in the major cities, you can go there, you can choose the ingredients, you can cook for yourself. It's there. What I would imagine is that here, I think अगर ये वो survival kits खाने वाली बात कर रहे हैं, तो जॉनी और जुगनू ने एक तरह से एक आई डोंट नो हाउ दे विल बी एबल टू मेंटेन द सप्लाई चेन, इट्स अ गुड स्टेप। वो कैसे कि आप ये देखिए कि टुडे लार्ज नंबर ऑफ पीपल आल्सो हैव टू बी फेड इन मेनी कंट्रीज, देयर आर लॉकडाउन्स एंड सेमी लॉकडाउन्स, तो उनको खाना कैसे पहुंचाया जाए। सो अगर उस डायरेक्शन में सर्वाइवल किट एक तैयार कर दी जाए कि जिससे कि बंदा दिन में 2 बार उस खाने को खा के गुजारा कर पाए, I believe it's all right because there must be large number of people who are stuck in different locations. For instance, बहुत सारे students ऐसे होंगे जो कि hostels में फंस गए हैं, बहुत सारे students, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, workers ऐसे होंगे जो कि particular locations में फंस गए हैं. So I believe it would be a useful thing, but however I must caution that first of all, if you're doing burgers, you got meat in it. And if you don't, cold chain the meat, and if you don't cook it, तो दोनों में ही प्रॉब्लम है। अगर cooked meat आप भेज देते हैं, it's all right, but आप uncooked meat को, it's taking an hour to get to some place. That itself will become then questionable. Putrid हो गया, कुछ हो गया, उससे पकाने में ठंडा लगा दिया। तो फास्ट फूड का तो कॉन्सेप्ट डेड हो गया ना फिर, अगर मुझे ही बनाना पड़ेगा बाय द एंड ऑफ द डे, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यू आर फ्री नाउ, आई मीन इन लॉकडाउन एवरीबॉडी इज फ्री, तो सब खाना बनाएंगे। लेकिन आप शर्मा, यू नो वी आर नॉट फ्री। आप भी जो कर रहे हैं सुबह से शाम तक, वो दैट आई हैव समवट ऑफ एन आइडिया, सो वी हैव अदर स्टफ टू डू एज वेल। हाउएवर दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग कि फास्ट फूड जो है वो भी इवॉल्व होगा, as the situation is changing. Over to Sohail. जी Sohail, you wanted to say something? जी, yeah. बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, चीजें चेंज होंगी, हैबिट्स चेंज होंगी, आपकी कंजम्पशंस चेंज होंगी, थिंग्स विल बी चेंज। और जो सर्वाइवल किट्स के मुतालिक है, डिपेंड करता है आपके रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट्स और या आपके फूड्स फूड्स अगर आपके डिफरेंट हैं। जैसे अगर हार्डीज को लिया जाए तो वी कांट डू दैट, बिकॉज शर्मा साहब की बात सुनूंगा कि अगर कोल्ड अगर अनकुक दिया देन अगेन इट्स अ प्रॉब्लम। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच या डिफिकल्ट फॉर कस्टमर। There is another interesting question here, because as we are talking about supply chain as well. अब imported burger patty आते हैं, मतलब there are like restaurants imported, मतलब raw material भी बाहर से आता है। मैकडॉनल्ड्स के मशहूर है कि उनके फ्रेंच फ्राइज जो हैं वो बाहर से आते हैं, या उसका एटलीस्ट रॉ मटेरियल बाहर से आता है। सो अभी लॉकडाउन सिचुएशन में आपके ख्याल में, एंड माय क्वेश्चन इज टू बोथ ऑफ यू,
Are we facing this kind of supply chain crisis? Jay, over to Sohail and then Professor Sharma. Jay. बिल्कुल इम्पैक्ट आता है इसका, और आपकी इंपोर्ट्स आ रही हैं लॉकडाउन से पहले। वी डोंट नो कि लॉकडाउन होगा मंथ का होगा, या इट ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया हमारे पाकिस्तान में, और फर्दर एक्सटेंड हो गया। अब उसमें जो सेल्स ही आपकी वो जो है वो लेस देन हाफ होगी। अब वो आधी रह गई है, तो आपकी इंपोर्ट्स जो हैं जिस पर बीफ पैटी है वो आ रही हैं, और जो इंपोर्ट हो रही हैं सारी, तो उसकी एक्सपायरी डेट होती है मेरे पास, इज डिपेंड अपॉन देयर लाइक 8 मंथ्स हैं, 12 मंथ्स हैं, और ये चैलेंजिंग है हमारे। तो इसको टाइम बाय टाइम हम वी मॉनिटर इट। अगेन वही बात है कि हम उसको जो है वो देख रहे हैं, और इसको अज्यूम भी करते हैं कि इसको टाइमली कंज्यूम किया जाए प्रोडक्ट्स को। अगर वो टाइमली कंज्यूम नहीं होगी, देन अगेन देयर इज अ कॉस्ट जो हमें इनकम करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम ये एक्सपायर्ड चीजों को फिर हम डिस्कार्ड करते हैं डेफिनेटली, कि टाइम पे उसको किया जाए, और नहीं तो वो कस्टमर के लिए नहीं है। All right, Ji, Professor Sharma, your take on it. You see, I'm very happy actually to learn Sohail साहब से कि sales 50% तो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी sales हो रही हैं, because मुझे तो ये लग रहा था कि sales वगैरह जो in the current context would be less than 10 or 20%, मुझे तो ये लग रहा था, because you see we would have a large livestock industry, जिसमें अगर सोहेल साहब मुझे सुन रहे हैं तो उनको पता होगा कि चिकन है, ये जो ब्रॉयलर है, ये इसकी जो उम्र होती है वो होती है 35 से 40 दिन। उसको 40वें दिन से ज्यादा अगर आप खिला रहे हैं तो यू नो इट इज जो फार्मर है उसको लॉस हो रहा होता है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि जो फार्मर्स होंगे पोल्ट्री फार्म्स के, उन्होंने तो अपना स्टॉक अभी कई कई जगह पे खड्डे खोद के वहां पे डाल के जला दिया होगा। कौन खरीद रहा होगा मुझे ये बताएं आज की डेट में? आई डोंट नो, दिस इज माय स्पेक्यूलेशन, बट सोहेल साहब कैन बेटर कमेंट ऑन दिस। सो रादर देन इंपोर्ट रिलेटेड इश्यूज, मैं तो कह रहा हूँ जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है दैट वुड बी अ चैलेंज, उसको कैसे मैनेज होगा? आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट पीपल द कंजम्पशन ऑफ पीपल of these particular types of foods would have shrunk considerably. क्या कहते हैं सुहेल साहब? बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं। इसमें चैलेंज दोनों तरफ से है। देखें, एक तो लोकल कंजम्पशन के ऊपर भी है, दूसरा जो इंपोर्ट्स के उसके ऊपर भी है। डिपेंड करता है जो आपके जो बात कर रहा हूँ, आई एम टोटली एग्री कि जैसे चिकन है, अगर उसको ज्यादा देर किया जाए तो कॉस्ट इंकर हो रही है, तो डेफिनेटली कर रहे होंगे। और जो डिपेंड करता है कि अगर आप फास्ट फूड के ऊपर करेंगे तो कुछ चीजें होती है, प्रोसेस होते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर प्रोसेस करके प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व किया जाता है और एज पर स्टैंडर्ड्स किए जाते हैं, जो जिसकी लाइफ बढ़ जाती है। जैसे अगर ग्रिल्ड चिकन है, अगर एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उस पर हम प्रोसेस करके उसको आप एक माइनस में रखकर उसको हम यूज कर सकते हैं, but not for long run, but at certain time. So then there is a business opportunity here, Dr. Saab. This is a business opportunity, which means अब देखिए जिसके पास लाइफ स्टॉक पड़ा है उसके लिए तो वो बर्बाद हो चुका है। So अगर there is an intermediary जो कि इस फूड को प्रोसेस करके रख पाए, which means जिसके पास प्रोसेसिंग यूनिट है आज की डेट में, जो लाइफ स्टॉक को उठाकर उसको ये प्रिजर्वेटिव्स लगाकर उसको ये ग्रिल करके या मैरिनेट करके या कुछ उसकी लाइफ को हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन एक्सटेंड कर सकता है। आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए, एंड दे विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस। I completely agree with you. जी सोहेल, last comment जी। मैं ये कह रहा हूँ उसको इतना लिमिटेड कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है। All right, so thank you guys for joining me. Thank you viewers for watching us. Actually there are many questions, but my time is up, so मुझे 35 minutes में इसको wrap up करना है. I don't want to drag the show. So it was lovely talking to both of you. My viewers, please keep following us, because next Saturday at 3:30
we will come again with the similar exciting panel of discussion. So have a safe day. Have a very nice day. Take care of yourself. Thank you. Thank you.